so that they can go there also. Okay. So please कौन दिखाएगा तुम सूरज तो सूरज इस तरह से देखो 5 मिनट हम थोड़ा रिलैक्स करते हैं तो इट इज फॉर यू नो दिस इज लाइक रूटर न्यूज लेटर ऑफ किताब मेरे को दे दो अच्छा तो आज आत्मा बंद है रे तो maybe this is one for your room you can sit down this is one for your room there and one for that okay so please start Suraj तो वो आत्मा का साथ हम प्रोग्राम बनाने की कोशिश कर रहे तो they did not patch up well actually they wanted to do but कुछ relation में कुछ strain हुआ I told Sunil he has been working with automotive yes so I told Sunil so Sunil explained but finally I said चलो ठीक है let me revive it and then I will text you again so this is also part to assist he has been working with the firewall yes second edition 2014 स्टार्ट करो ये तो आपको दे दो आपको डेकोरेशन के लिए रखनी क्या अच्छा भाई हाँ वो इनोवेशन आपकी है सुबह की इनोवेशन लिफ्टिंग की I would say the idea is there and then the team has right yes okay let's start Yeah, so good morning everyone. I'll just be giving this presentation about Tag IT Delhi. max 7 minutes Yes. So RootTag is an initiative of the Office of the PSA, that is Principal Scientific Advisor to the Government of India, and this was formed when previous PSA Dr. Chidambaram was in the office. So he initiated this concept of RootTag. And right now it is in 7 IITs plus 2. We have Indore and Jammu. They are also working with RootTag IT Delhi. So basically, the concept is to bridge the gaps between the villagers and then connect them to premier institutes, where we'll be solving their technical needs. Basically, the needs we find out by conducting regional workshops. And mostly every 3 to 4 months we organize regional workshops in different locations throughout the country and then we find out the needs with the help of NGOs and then we'll be taking it back to IITs and with the help of professors, staff, we solve it and then we get back to the society. So it's a iterative process where field research and lab research is interconnected. These are some of the technologies which we have worked on and these are ready for dissemination. Here you can see Tulsimala device. I just show the videos of it. This is the device where this was a problem from Bharatpur, Rajasthan, where women they make beads of Tulsi stem and earlier they used to hold the stem in their hand and then use a tape recorder DC motor. And then do this learning operation and cutting by the so I'll show the information what the solution would have provided and how it is done as shown in the comment slide. Then there is Treadle pump.
So this is a device that is used to pump water from underground to up to 7 meters. The water can be lifted by atmospheric pressure. So due to the traveling of pressure, the pressure is developed and the water is lifted from the ground. We have a bullock-driven tractor where second-hand auto car seat is used for the comfort of the farmer. And there is a winch mechanism which was developed by IIT Delhi, which is implemented here. So whenever the farmer reaches the end of the field, so he has to take a 180-degree turn. So for that, if the plows are inside the ground, then it will be difficult for it to. So here, using the winch mechanism, he can just rotate. There's a lever given, and the plows they lift up, so then you can easily roll it up. So they save their energy. Shipper sharing device. This is the indigenous device developed by IIT Delhi for sharing the edge of the sheep. Earlier, the sharers used to use scissors to share this. So this is where the development is. Previous imported device costed up to 2.5 lakhs. It was imported from Germany and Switzerland. This is completely indigenized and the cost is 1/3 of the imported device. Animal driven gearbox. This is again to convert the draw power of bullocks for various applications. Here you can see this is a screw pump, but again the water is lifted from underground. So just from 2 RPM of the bullock motion it is converted to 125 RPM. Groundwater measuring device. So in various places, these monitoring wells are present. These are run by NGOs and government agencies to keep a track of the groundwater level at different places. So this device is used to check what the water level is. So whenever the probe, as you've seen in this video, initially insert the probe inside this monitor. So when the probe it touches, comes in contact with the water, there will be a beep sound. So then the wires are marked based on the length. So whenever the sound comes, you can just take the reading from the wire. Bangle making furnace. This again is from Bharatpur where people make glass bangles. So the heat inside is around 1200 degrees, and because of the radiation and the fumes from the molten glass, the life expectancy of the artisans is around 40-45 years. So WITAG intervened here and they have developed a thermally insulated highly efficient kiln which saves around 70% of fuel. These are some of the ongoing. This is also completed right now. AC Power, Sultimala bead making device, stone dust, deposit, decortication. We have a coconut tree climber, parting machine, Tawa making process. You can stop. Yeah. So these are the videos. So you can go to our website also, in the newsletter. So you got some links. If you have questions to ask, any question? What is Krishna? Any question? So bring problem from your neighborhood. Either you solve it or leave it to us. Okay. So with this, if you wanted to continue having listening or discussion, you are welcome. Otherwise, 1 o'clock we go for lunch together. Okay. The choice is yours. You want to stay and listen to our discussion, accepted. If you wanted to leave to do your work, that is all. Okay. So with this, we'll start. Rasma, अभी का हमारा प्रोजेक्ट है सूरज और NSR Okay, am I audible? तबीयत कैसी है? So तबीयत 70% fine है. I am fine. अच्छा ठीक है चलो. Okay, let's start. कौन बोलेगा? सूरज? Yeah, so the project updates
तीन प्रोजेक्ट का है मेरा, जैसे फर्स्ट इज फेस मास्क, तो ये नेसेसरी बताएंगे। ये डिजाइन मॉडिफिकेशंस Vinay had suggested and we had informed Shekhar. Shekhar is now not visible for some reason. So Vinay sir. हाँ मैं शेयर करूँ क्या स्क्रीन? Should I share the screen? Yes sir, if you have something. Okay, my screen is visible to all. Yes, yes. Okay. The first project is improvement in vulva sheet decortication process. So we have suggested a CAD model. It is a manual based press type mechanism which can break the vulva sheet. You can see the mechanism in the video. एक्सप्लेन करो विजुअल शीट कहाँ पे होगा? हाँ अभी इसका वीडियो में आएगा सर, मैं बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। इसका वीडियो जस्ट अ मिनट। चलेगा तुम्हारा पार्सल चलेगा, you don't need a laser point. Okay. So this is the place we will cap the vulva seeds at 12 in numbers, and this is the press. So when the press will press the vulva seeds, so it will be break. A similar mechanism has been, we are building this mechanism. So just see the video, then I will explain. So this is the press punch basically. So this is the hello. Go ahead. So this is the basically the progress what we are doing in vulva. The setup is about to complete. Within 10 days, we will be able to complete this setup, manual setup. मूंगफली वालों का डाल के देख सकते हो तोड़ते के लिए। हाँ तोड़ा सर, तोड़ा हुआ है मूंगफली डाल के, भिलवा भी तोड़ा था कल सर। हाँ तो वो वीडियो मेरे पास है, पर मैं थोड़ा इसमें सेटिंग्स एडजस्टमेंट, इट रिक्वायर्ड सो मेनी एडजस्टमेंट्स, बट वी हैव ऑलरेडी गॉट द भिलवा, so we have break those yesterday also. But अभी ट्रेन के अंदर थोड़ा इंस्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, लेफ्ट एंड राइट। एक्चुअली मुझे वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आवाज में। It seems some jerky movement because the alignment. Yeah. Some adjustments are required because there is a play in the punch, which is moving up and down. जो आपके movement के लिए posts हैं, you want to keep them cylindrical or you want to keep them square or rectangular as they are right now? Because if you want to make it good smooth movement, you may want to substitute the pillar posts circular cylindrical. So sorry sir, I could only hear little bit. I could only understand little bit what you are saying. Your column should be cylindrical for a smoother transfer of the motion instead of square which you are building. Okay. ठीक है? Okay. और ड्रिल मशीन में देखते नहीं है, ड्रिल मशीन का दोनों साइड का कॉलम जो होती है। Actually, you are correct, sir. Cylindrical will be much better, but I have made this with the scrap available in the workshop. So once this idea will be successful, then I will make the complete setup with those every idea. I will take your suggestion as well. गोदारा जी का सजेशन है। Okay, and we also feel the same. Any other comments? तो इसके बाद सेफ्टी कहाँ कराओगे? सपोज ये तो समझ 8-10 दिन में बन जाएंगे। हाँ सेफ्टी सर इसमें कैड मॉडल में आप देखिए। ना सेफ्टी नहीं, टेस्टिंग।
टेस्टिंग तो सर बिल्वा सीड्स हमने मंगा लिए हैं बैतूल से, आ गए हमारे पास। ओके। हाँ, तो कल इस पे बिल्वा सीड हमारे पास है, हम लोग वहीं टेस्टिंग करेंगे अपने वर्कशॉप में। तो वो जो स्लोप इसलिए दिया गया है, जो सामने जो स्लोप है तुम्हारी, हाँ सर, स्लोप इसलिए दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। कैड मॉडल को आप देखिए, जब बिल्वा सीड को तोड़ने के बाद ना गिराना भी पड़ेगा। अच्छा अभी तो दोबारा लगाएंगे तो ये रोटेट करेंगे हैंडल को आप, अभी इसमें वीडियो में आप देखेंगे तोड़ने के बाद। जस्ट सी, ये तोड़ने के बाद इसको आप रोटेट करेंगे, फॉलो दैट बकेट। अच्छा, रघु भी बोलना चाहते हैं। यार I was just going to ask उसके कितना फोर्स लगना चाहिए 12 सीट्स को तोड़ने के लिए ऑन एवरेज, और उसमें एक्चुअली राइट सर, इसका एनालिसिस हम लोग कोशिश तो किए थे, बहुत एक्चुअल हमें आइडिया नहीं लग पाया बिकॉज वी डू नॉट हैव दैट टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स। सो एक एवरेज हमने कहा हिट एंड ट्रायल से वी विल ट्राई टू एडजस्ट, because it is very difficult to know the load, because we need impact machines to test how much load is required. Basically you need to see whether suppose हम 100 सीट्स तोड़ के देखते हैं 100 में से कितने टूटते हैं कितने नहीं टूट रहे हैं, राइट सर, कितने ज्यादा ओवर क्रश हो रहे हैं, वो थोड़ा सा वो स्टैटिस्टिक्स लेके तो उससे कुछ आइडिया आए। ठीक है, राइट सर, राइट, ओके, करेक्ट। हमारे अखिलेश जी ज्वाइन किया हमारे साथ, उसका एनालिसिस बहुत पसंद होता है, कुछ भी एनालिसिस करना चाहते हैं। नहीं, हमने अभी सर वी आल्सो ट्राइड बट वी कुड नॉट एबल टू, बिकॉज़ इंपैक्ट कैसे मेजर करें वो समझ नहीं आ रहा था। उनको परसेंटेज हम हार कर लेंगे, 1 रुपया में 1 मिनट चार्ज करके उनको हम दे देंगे एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, ओके, चलो ओके, एनीथिंग एल्स? हाँ, नेक्स्ट। एक मिनट रुको, विनय जी रुको, विनय जी आगे काम कर लो। विनय जी आपने जो स्प्रिंग यूज किया है वो राइट एक सर, थोड़ा इलोंगेटेड लग रहा है और एक तरफ छोटा है, मतलब क्या वो बाय डिजाइन है वैसा स्प्रिंग या फिर नहीं सर, एक्चुअली क्या है कि द सेटअप इज नॉट कंप्लीट, बट व्हाटएवर स्प्रिंग एज ऑफ नाउ वी कुड एबल टू गेट इन द मार्केट, वी आर इन द टेस्टिंग की व्हाट could be the actual because if we design the stiffness load by deflection, even though we will not get the proper springs in Greater Noida, so we tried with what is available, so we will adjust and we will calculate ki what actual spring will be used, right? So this is the setup at the stage when we are seeing that the concept is working. तो बिना एक जनरल कमेंट है, many of the purchases these days are available online, right? You don't have to prepare, and तो वो भी ट्राई कर सकते हो। Sometimes no we think कब मार्केट में जाएंगे, मिलेगा नहीं मिलेगा, because अभी हमारा एक बूट कैंप करा था रोबोकॉन के लिए, all items have been ordered online, ना? Right. तो थोड़ा सा प्लानिंग ठीक रखोगे, and you are not running after deadlines for that matter, और 1-2 दिन डिले भी होगा पार्किंग पर, तो let us try to get that habit also in place। दोनों चाहिए, कभी मार्केट में जाके आइडिया लेना चाहिए, वो कल मेरे को दविंदर बता रहे थे जब तक मार्केट में नहीं जाओगे तो आइडिया नहीं लगेगा, राइट? हाँ सर, राइट सर, वी विल टेक केयर ऑफ इट, वी विल डू इट, कुछ मिक्स एंड मैच करके यूज करो। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट So next is the teleoperation of face mask. So earlier we have built this setup, this device. This red one is 3D printed. So we have to do the just trials. So first I have tried on myself. What I found that if this back part is stiff, then it will not adjust with the face of each person. So this part is to be flexible. So this is a handmade silicon. We have made it at our home itself. So it is not also perfect. So it is required that the back part should be of such material that it can adjust any face of any shape. This is the first thing. So what I have got in the right side, you could see that this is a commercial silicon mask, American based. So I purchased this mask for myself from some of the person which has brought it from America. So we thought that this will be good, that the back part of this mask, if this part is silicon, and if we replace this part, these two parts we have made at our home using the molding the plastic.
so that we can make the setup to test that it will work or not. Because the second problem with this setup is that it is quite, size is quite big in terms of perpendicular to the face. This is quite, size is big as per compared that from the perpendicular to the face. So we want to reduce this distance. So we thought that we keep the back part as silicon and this part as small. So and we will put this mechanism, spring mechanism over here, and other things will remain the same. So we are in this phase that we are able to made it at this stage. Any questions? सोच रहा हूँ. Thinking the question. Think अभी people are telling, you know, COVID is almost vanishing, तो इसका क्या utility रहेगा? हाँ सर, यूटिलिटी बता रहा हूँ. यूटिलिटी इसका मल्टीपर्पज है. तो कोविड अभी क्या है, हम इसको डिजाइन कर रहे हैं हॉस्पिटल पर्पज ऑल्सो, क्योंकि सिलिकॉन यूज कर रहे हैं तो सीलिंग प्रॉब्लम आता है डॉक्टर्स की तरफ से. They say that is a ceiling problem. So doctors can still use, because whether COVID or no COVID, doctors will use this mask in operation and anywhere in the contagious environment. Even at various industries like cement and other also, they also required a mask replace. So I would suggest, actually we are trying to make a friendship with the World Design University in Sadie Park, which is our next door, and some of our IHFC people will be interacting with them, you know. So if you agree, I will request if Akash can coordinate and maybe, you know, be in touch with you, so that they are having a undergraduate final year project presentation next week. So if Akash can invite you on that day, if you can maybe along with Suraj, if you can pitch in your product, so they may also help you with the design aspect, particularly the Right, you are talking about, no? Sir, I will be happy if help I could get the, because I do not have students to work on. I am working it with the pass out student who is working in industry. If some help of students I will get, I will be happy to take. Immediate students तो उनको मैं दे सकता हूँ कोई सारे actually, but what I'm thinking is, I think at this stage it probably requires a design input. That's my feeling. So if you agree, then Akash को touch करा देंगे. Right, I agree, sir. I agree. I just want, out of curiosity, the picture on the left, you're showing a red prototype probably, right? Right. Which I can see some kind of, are these just based feed pipes for the injection molding, or this is a feature? 3D printed, sir. It is 3D printed. तो वो जो नीचे इसमें criss cross जो ये पार्ट, ये वाला पार्ट सर, नीचे हाँ यहाँ पे ये पार्ट सब all 3D printed at IIT. इसका फंक्शन क्या है? अच्छा, ये इसका फंक्शन सर, एक्चुअली आप व्हाइट वाले को देख रहे हैं, व्हाइट वाले को राइट साइड में, तो एक्चुअली यहाँ क्या है कि यहाँ पे आप इसको रिमूव कर सकते हो, फिल्टर लगा सकते हैं इसके अंदर. इसको इसका पिक्चर में कैसे दिखाऊं? मैंने वो पिक्चर में देखा. You have any picture with old condition, और तुम्हारे पास सामने है तो पहन के दिखाओ. अच्छा, मैं पहन के दिखाता हूँ. मेरा वीडियो दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है. पर बड़ा करो उसको. हाँ, एक सेकंड. सूरज बड़ा करेगा इसको. एक सेकंड में उसका ऊपर का कवर लाता हूँ. एक सेकंड. बस दिख रहा है. टेक्नोलॉजी में क्या है, यूट्यूब पर हम देख रहे हैं, और उसके बाद वर्चुअल प्रेजेंस भी हो जाएगा. हफ्ता एक दिन पे, राइट? Basically, we will wear it, and this is the place to put the filter over here. This is the cover. You can lock. This is the purpose. You can just have this device. You can change the filter once it is get damaged. Then you can change the filter. You can. This is the cover to stop the filter so that it should not fail. The operation is this teleoperation. Should I wear and show it? No, everything is clear now. Thank you. Just a minute. दो लोग उनको लगता है, दो लोग यूज करेंगे. ऐसा कोई कॉलेज डिवीजन ऑर्गेनाइजेशन तो होंगे ना, तो उनको हम टेस्ट क्यों नहीं करा सकते? कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा जो कर सकते ये सब चीज.
सर दोबारा बोल सकते हैं एक बार, सॉरी। टेस्टिंग के लिए राइट। जो भी तुम्हारा जो फीडबैक आ रहा है, दिस इज हाफ बेस्ड फीडबैक ना। एक फीडबैक आया उसको पीछे तुमने लग गया अभी नहीं उसके एक बाद नहीं एक फीडबैक नहीं है सर, मैंने अपने कॉलेज में स्टाफ को भी पहना के दिखाया था, टीचर से भी फीडबैक। बिना तुमने अभी बोला कि कंस्ट्रक्शन वर्कर यूज करेंगे तो तुम्हारा स्टाफ पहनेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कुछ भी बोल दूंगा, मेरे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना। मैं पैसा देता हूँ ना, मेरे को पहनना पड़ेगा। मैं कुछ भी बोल, अच्छा भी बोल दूं, बुरा भी बोल दूं, इट रियली डजंट मैटर टू मी। आई थिंक यू शुड प्रोबब्ली थिंक ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जो इसको बेचते हैं, जो इसको डिप्लॉय करते हैं, वहां पे 4-5 पीस बना के, राइट, इफ यू गिव देम फॉर टेस्टिंग एंड प्रोबब्ली 30-40 पीपल यूजेस इट, जिसको बाकी यूज भी करना है ना। हाँ ठीक है सर। लुक फॉर दैट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन Sir, right, sir. We will go with that stage. But first that the changes we find that it should be done first. That changes we are doing. I agree, maybe, but whether doing fast, no, then another delta will come, another delta, so it will take a havoc time, you know. Right. इसीलिए इसको साथ साथ बाकी को भी पहना के हम दिखा सकते हैं. Right, sir. Right. I take your advice. Next. Next is the Batasha improvement in Batasha making process. So the new setup for testing is ready for testing. Actually, we have fabricated it. Now it is ready for testing. So within 10-15 days we will test it. We are planning to test it at Ghaziabad and Secunderabad. इसका और पिछले का क्या फर्क है? Pardon? इस सेटअप का पहले जो सेटअप बनाए थे उसमें क्या फर्क है? न्यू सेटअप में क्या? No, same setup है. Actually one setup we are having, we have sent it to Kolkata. So we have to do some rigorous testing with the same setup. So we do not have a setup. उसी को दोबारा बनाया? उसी को दोबारा बनाया अभी. Pardon sir? Next. It's over sir now from my side. Thank you. तुम होते तो अच्छा लगता हमको इधर. Maybe I am also missing, but क्या करूँ, इतना दांत में दर्द मेरे था, मैं I was really. कर रहे अच्छे पराठा खा रहे, खाएंगे भी अभी लंच में. हाँ sir, I am fond of fooding. I am really missing that company. इसीलिए तो तुमको बोल रहा हूँ क्या पराठा मिलता है. आलू पराठा, गोभी पराठा, मूली पराठा, मिक्स पराठा, आलू प्याज पराठा, पनीर पराठा, और वो भी अच्छे मक्खन के साथ, व्हाइट मक्खन के साथ. ओके, नेक्स्ट राजकुमार कौन है? सुरेश. इसमें बिगवा में हमारे अपडेट्स जो प्रमोटर के साथ टेस्टिंग करना था. We have received some Bilwa seeds from Betul. तो हमने मेकर स्पेस में भी try to break them. तो वाइस में डाल. हाँ, वाइस में डाल के उसको टेस्ट करें. थोड़े से मार्केट डिफरेंट टाइप से टेस्टिंग के कैसे ब्रेक हो सकते हैं. तो 1 आवर में हम लोग इतने और उसका आप जो उसका स्टेन भी लगता है, तो डिस्टेंस का फीचर कर देख सकते हो. I hope you are taking care of how to take care of the skin from those stains. उससे पूछ के पूछो. हाँ, सूप से निकल गया था. Even if you are wearing gloves, तो उसके अंदर पता नहीं कैसे. Now we are just trying out different types how to break और कैसे अंदर का सीड भी तोड़ता है. If it crush it too much, तो अंदर भी crush होता है. तो अंदर crush होने से फिर उनका रेट भी कम होता है. तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इसका सर हम लोग अभी होलिस्टिक व्यू देख रहे हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेस वी कैन वर्क. एक नाट क्रैक कराता है, पता है वो कौन सी नाट होती है? अरेक नट का. नहीं, अरेक नट इसका. अरेक नट का तो काटते हैं. ये तो अखरोट का आता है. अखरोट का. अखरोट को तोड़ने वाला आता है. हाँ, इस टाइप का आता है ना. हाँ,
So why did you get one of those also? And to see what happens. वो भी एक बार वो सब थोड़ा ड्राई होता है, दिस इज डिफरेंट, थोड़ा कैशू बुके टाइप होता है। थोड़ा उसमें अग्रीमेंट जरूर पड़ती जो यहाँ से उसको पार होना नट क्रैकर भी नहीं But we'll try. but the thing here value proposition that is appropriate here is that the steel should get crushed and because the price is depending on that. So what technology can we apply so that either we do sorting because you know इसके लिए sorting machine बने हुए हैं उसी principle को use करके हम बड़े और छोटे को अलग अलग करके they can be made to go into the different Means. yeah, different benches and different levels of pressing, right? Like if you are crushing it, break it. The bigger one we don't crush beyond a particular point, and then we need to optimize what is required to break it. Yes, sir. ये तो robotics से कुछ ले सकते हैं देंगे जब भी ऑर्डर देंगे रोबोटिक्स का एक्चुअली एक है इफ यू थिंक robot device for such purposes, the cost will be relatively the higher side, and which need to be less. So my approach is robotics technology to be used from the subsystem level. That's what I meant. Robotics से कुछ ले सकते हैं हम Exactly. रोबोट नहीं बनाएंगे लेकिन जो उनके पास सेंसर्स या Right. I was thinking can ultrasound help determine the size of the sting. But then it is too far-fetched at the moment because कैसे how to do it and how to apply it. That is where in robotics you normally have no ways of using some. Similarly, something like if you're applying pressure, there is a certain resistance. But the moment it cracks, the resistance becomes less. So can that be used as a measure to stop the thing? And can that be done without sophisticating it too much? So that is the thing that we can look at. No, for that, what here Ravi is telling the idea, you can think of going to some of the UPM type of testing machine, right? Hoping that it will not damage the machine with this oil, but you can put in some kind of flow, as you can see, yeah. In fact, what is the force requires to track it, you can do it. Or at least in our lab, one of the robots have a force flux sensor in it, no? So you can let the robot to push this thing and see at what force it is breaking. That kind of devices are also to be there, the robot can do. So really, Actually, विनय बोल रहा हूँ. बोलो विनय. Actually, compression and impact, they are two things. Generally, if you observe how the artisans are breaking Wilba, they are making impact, not compression. So the idea of compression will not actually work, I think so, because the experiment we have done earlier. That is my idea. Okay. Sure, let them do it. Next. तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा तो नहीं है, जैसे कि सपोज एक ही एरिया से तो एमपी से बना, मतलब एमपी में होता है तो उसका साइज होता है, अगर छत्तीसगढ़ से लेते तो उसका साइज डिफरेंट होता है, तो अगर सेम In the same region, not much of a variation. My suggestion would be not to worry about too many things breaking and not breaking. वो तो segregate करके अलग prices में जा सकते हैं, right? So that should be trade off. How easy it can be cracked, and after that, just like cashew, no? Tuta cashew भी बेचता है, whole cashew भी बेचता है, right? And so that way you can segregate. For the segregation, there could be shifts actually, no? You can just separate the shifts and then you can have 2-3 shifts you have it and you can separate it. Okay, next. Owners तो they are closing this. He made you a brother or what? Well, we have developed that dome, but it was not all. They were not useful for that. Developers and Birmingham, they are trying to explore different approach. They said once they have something, then they put one more. So right now we want to explore. So ये ऐसा नहीं हुआ अपने ऑफिस में. तो डोम अभी इस प्रेजेंटेशन में नहीं है. उनका वर्कपीस जो है that is बड़े-बड़े columns. They were working on some temple पे ये columns बनाए. तो dome was just a small. तो उसमें बैठ के उनको करना they were not comfortable. Plus
अंदर जो मशीन टूल्स भी लेके जा रहे थे लोगों को डर लग रहा था they were not ready to use it. ये मास्क है उसको उन्हें अप्लाई कर सकते हैं पर्पस नहीं है तो पहनते नहीं मास्क तो पहनते नहीं तो मास्क भी देते थे Because of the sweat and the abrasion with the particles that are coming. ये तो मैं सोच रहा था कि इसी मास्क को डेवलप करके इसमें एक पावर्ड डिवाइस आता है काफी ऑपरेट करता है तो ऑक्सीजन लेवल का नंबर नहीं और फिल्टर एयर अंदर जाके और फिर उनको थोड़ा पसीना भी सिस्टम बंद हो जाएगा तो वगैरह भी खाते रहते हैं ये करता तो वो भी बार-बार थोड़ी सी तो गुटकी की जगह ऑक्सीजन दे देंगे निकोटीन की च्युइंगम आती है ना पहले निकोटीन वाले ले देंगे फिर बिना निकोटीन के ले देंगे आ जाएगा नहीं इसको actually Bunyan Development is actually kind of I also say is I mean they are not funding any other headway. That's why they close so there is not really here. But then from societal point of view, is our responsibilities really over? The reason I'm telling you, 2000 हम जब भरतपुर में गया तो काफी प्रॉब्लम आया था ना उससे जब जयपुर में गया They were talking about it a lot. right? So after that we came to this one, so बीच में 3 साल बीत गए having little headway, I think living at that side is not a very good idea. So मैंने हमने हार गया इसके सामने. So I think कुछ alternative approach, at least to keep the problem alive. तो एक idea मैं सोच रहा था, can we have an institute-wise grand challenge? इसमें हम कुछ जैसा 2 साल पहले मैं कभी कुछ कोशिश कर रहे थे ना open ended है. Instead of open ended, can we give this as a grand challenge? And why institute we can make it countrywide also, right? To at least to keep the problem alive and awareness creation. वैसे भी स्टूडेंट्स से ग्रांड चैलेंज वगैरह के प्रति ही इम्पैक्ट होता है Exactly. स्टूडेंट्स को वैसे तो कि एक प्रॉब्लम है सॉल्व करो दे देना Right. यू फ्लोट एज ग्रांड चैलेंज कॉम्पिटिशन के नाम पे Right. And तुम्हारा जो endowment fund से भी तुम लोग भी कोशिश कर रहे हो. I think money is not a problem. हमारा मजदूर के पास भी इनोवेशन का पैसा है. रूटक से भी हम कुछ जनरेट कर सकते हैं. And I'm sure तुम्हारा alumni का जो भी body है, they will be also supporting this activity. If not monetarily, but at least नहीं ग्रेजुएशन के नाम से तो लगना है कि पैसे देने को तैयार हो जाएंगे. हो ग्रांड चैलेंज का फैंसी थिंग पर है Alumni would be capable by the very concept of grand challenge. If you agree, हम देवव्रत मुनि को बोलते हैं, now in his what a grand challenge problem बनाते हैं. So this is February, 1 महीने लगाते हैं मार्च. तो मार्च अप्रैल में हम लोड करेंगे पूरा जो समाज जो है ऐसे समाज जो है हम grand challenge करते हैं देखते महीने की. And उसको कंट्री वाइड ओपन करते हैं तो बोलो तो वर्ल्ड वाइड ओपन करते हैं. नहीं कंट्री वाइड करते हैं वर्ल्ड वाइड में ना तो people who have more resources Actually, एपिक्स वाले ने प्रॉब्लम तो लिया था. Purdue में they have taken it. They also left it video. You have any of their slides or video? What I'm saying is कि उससे क्या होता है उन लोगों के पास रिसोर्सेज भी ज्यादा है तो वो हमारे यहाँ के लोग जो है वो डील पड़ जाते हैं. मेरा तो कंसर्न गोइंग टू इंटरनेशनली जस्ट टू मेक अवेयर हम भी कोई तो मानने वाला है यहाँ पे. जस्ट मोर ऑफ पब्लिसिटी. कोई हाँ कोई नया आइडिया है तो अभी आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ द ठीक है ना हम इस तो इंडियन नॉन इंडियन कुछ नहीं बोलेंगे. हम प्रोजेक्ट ग्रैंड चैलेंज लॉन्च कर देंगे. इफ कम्स व्हाट इज देयर. तो वो एपिक्स में भी एक प्रोजेक्ट लिया गया थे. 2-4 गर्ल्स एक्चुअली टेकन इट. ही इज फाइंडिंग आउट. तो आगे चलो क्या क्या करना कोशिश किए थे. अच्छा तो दे एक्चुअली स्टडीड द थिंग बट दे कुड नॉट प्रोवाइड द सॉल्यूशन. तो दे लेफ्ट आफ्टर 1 सेमेस्टर. इन्हें भी उनका भी 1-1.5 साल का प्रोजेक्ट चलता रहता है. तो आई थिंक लेट्स टेक इट एज अ ग्रैंड चैलेंज. तो बन्नी देवल से बात करो. मे बी नेक्स्ट मीटिंग में उसको बुलाओ. No, and I think we convince so the problem जिंदा रहे and ऐसा करके जिंदा रखेंगे कोई ना कोई एक दिन सॉल्यूशन निकल ही आएगा. without finding a solution to close the problem. I think it's not. And actually when it is such a head, I think Ministry of Health को भी reach out हो जाएंगे हमारा. I'm sure. सरकार कुछ नहीं कर सकते. I also think
some of Yashwant's research has to be applied to it. To what are we trying to solve and what do they mean? Good idea. Because basically, if the solution has to reach the people, then we have to actually be solving the problem that the people want to be solved. So, we have to communicate with the ground because we have not communicated much in the ground. Me and Suraj visited. While I visited, same time we did this device and tested this. But जो ground level users हैं, उनसे भी बात करनी है, जो contractors हैं, उनसे भी बात करनी है because here again the same issue, like your Bangalore problem. The people, the contractors have least concern. The people are the ones who are affected, but they have several constraints of गुटखा खाना है, पान खाना है, खाना वो खाना, वो सब भी बीच में है. So we basically have to look at the problem from the user perspective and then define the problem accordingly. Otherwise हमारे solution का मतलब नहीं रहेगा. दोनों मिलके करो. मैं बोलना चाहूँगा सर. मैं और सूरज जब गए थे तो हम कम से कम 20 से 25 लोगों को बिठाए और फिर वहाँ कॉन्ट्रैक्टर भी थे तो उनका प्रॉब्लम हम सुने फिर मतलब बहुत सारे मतलब थोड़े हिचकिचा रहे थे बोलते हैं. उसके बाद थोड़े देर में पर्सनली बात में थोड़े बहुत कुछ बोले भी कि सर ऐसे आप लोग तो हर साल आते हो और अपना रिपोर्ट बना के नाम कमा के चल जाते हो. हर साल अलग अलग लोग आते हैं, कुछ होता नहीं है. हम अपना प्रॉब्लम आपको बताने में डरते हैं कि कहीं हमारे ऊपर कुछ ऐसा ना हो जाए. बात करने में डरते हैं. And they have not been communicating, but they are right. They have gone 2 or 3 visits in the last 3 years, but we have not delivered anything to them. Not just us, even different NGOs they come who बोलते आते हैं फोटो खींच के चले जाते हैं. हम किसी बात में नहीं करना चाहते हैं because this problem remains. These people die very early because of the silicon in the lung. I think what Ravi is telling good. So you are involved in the project already. PhD में ये चाहिए. I think for some holistic point of view से इसको करो. और primarily इस डिनर अपने ये करते हैं. इसमें बहुत सारे इनपुट आएंगे. Other than Gorakhpur area, आपकी एरिया में भी अवेलेबल है. बस अगर यहाँ पे डेटा उसमें नहीं आ रहा, बाकी डेटा हो सकता है आप. I think it's a good idea. I think it's a part of your study. So that will add the importance to your work also. And we will target by summer we launch it. इन लोग फील्ड में गया थे, इन लोग को ज्यादा बता पाएंगे वो क्या एक्सेप्ट करेंगे. तो भी एफएस में जब हॉट वेदर में काम करते हैं एनीथिंग लोग अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है. उसी के मैंने बैटरी पावर वेंटिलेशन को डाल आपको कुछ ठंडा भी देगा. एक्चुअली सर एक्सप्लोर कर सकते हैं. हमारा एक आदत है मतलब हेलमेट हम क्यों पहनते हैं पुलिस से बचने के लिए. मेंटालिटी भी है कुछ पहनना नहीं चाहते. ये से इसमें कंफर्ट है. जैसे रस आता है ना उनको पान खाते हैं. अगर ये पहनने से उनको कंफर्ट मिलेगा, आराम मिलेगा. उनको पसीना आ रहा है, फेस पे नहीं आ रहा, फेस की पसीना नहीं गिरेगी. मुझे मास्क में लगा पूरा कवर कर दिया. इसके आगे ट्रांसपेरेंट राइट. और फिर अंदर से फैन किया है, तो फैन एयर सर्कुलेट कर रहा है. ट्राई करके देख सकते हैं. लेकिन इसमें ये सवाल है कि वो जो उनको मिलेगा उसको कौन देगा, कॉन्ट्रैक्टर देगा. वो तो बात से बात देख लेंगे. हम 5,000 के 5 लोगों को देके लेंगे. ऐसा करते हैं. You have to take it up. ठीक है. पहले गाड़ी चला देते हैं. सर आपके साथ हाँ. ठीक है. Okay. So you will be coordinating these part with him. I want to connect the other. But run challenge is on. Yeah, coming question. मैं पार्टिसिपेंट हो गया गाड़ी. हाँ. चलेगा. Next. सर तो हमने जो अभी गाड़ी मशीन बनाया है Actually sorry, जब सूरज जाओगे ना फेस मास्क के लिए डिजाइन में तो आकाश ये भी प्रॉब्लम दिस इज एक्चुअली वेरी सीरियस प्रॉब्लम. तो ये भी तुम मेंशन कर देना. ये भी इशू है. 2 प्रॉब्लम बता देते. अभी तुम जाने वाले थे ना. हमें जा रहा हूँ परसों गोरखपुर बट पूछ ही जा रहा हूँ. इट इज हार्ड. आई कैन विजिट. हाँ एक दिन इसके लिए लगाओ तो देख क्या. ऑलरेडी 3 महीने पहले जाते हैं.
मतलब ऑलरेडी 3 months बैक पिछले हम गए थे ना, तो उनसे बात करके आए हैं। तो उनको बोलो आप हमारे पास थोड़ा सा रिसोर्स क्या करने के लिए, आप बोलो क्या करने में आपको फायदा होगा बताओ। हम उन्होंने 3-4 सोल्यूशन दिया, आपको पसंद नहीं हुआ, हम आपको मदद करना चाहते हैं, क्या बताओ। साल एक बार जाओगे तो हम कुछ क्या खाओगे या गाड़ी खाओगे, और आप रोज जाओगे तो कुछ ना कुछ बाहर में मिलेगा। बोला आपको मिलने के लिए आया वो कर सकते हो। हाँ, किसी का कोई हुआ के देखना चाहते थे, वो खराब हुआ ये भी देखना चाहते थे, मिलने के लिए आया हो दोस्त भाई को, ऐसा कर सकते। ठीक है, आपको अगर कन्वर्ट का एक सैंपल देंगे आप मुझे हाँ हाँ हम तो इतना बड़ा बॉक्स लेके गए थे, हमें डर भी लग रहा है कहीं ट्रेन में ना छूट जाए, कुछ भी दे दो लेके जाते हैं। नहीं फर्स्ट टाइम उन्होंने बनाया था जो सी थ्रू मास्क कोविड के लिए, तो उसको मैं इसके ऊपर अगर मैं वेंटिलेशन हो गया करता तो दिस आइडिया इज एक्चुअली पार्ट ऑफ अनदर आइडिया जो पुलिस में ट्रैफिक मैनेजमेंट में खड़े होता है। तो माय ओरिजिनल आइडिया वाज फ्रॉम देयर दैट इज एक्सपोज्ड टू सम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल दैट आइडिया वाज टू हैव दिस होल थिंग ट्रीटेड, the air is treated before it goes into the so now here we need only filtration. So this can actually become a bigger multi-purpose and some of the sensors तो इंटरनेट क्या I would say you are agreeing to take this thing, उसको भी फेस मास्क देगा, बोलो ये करते कुछ हमें किया तो ये भी आप ट्राई करोगे क्या? उनका मतलब खरीदेगा, ये भी दे देंगे तो ये भी ले जाएंगे, सर अगर वो अरेंज हो गया ठीक है, बट हमारा मतलब तो दे जाए इसका फेस मास्क मंडे वाले पास है। हाँ मॉर्निंग 5 टिकट ले लेगा। यहाँ से आते दिल्ली से जाओ कैंपस से जाओ निजामुद्दीन नहीं घर से निजामुद्दीन साकिब साकिब हाँ ये और लेते हैं साकिब उसका बढ़िया कोई सैंपल हो देना टॉप नॉट संडे में कल हाँ कल के दिन में ले लो। चलो ठीक है। सर हमने जो गाड़ी मशीन भी बनाया है तो कुछ उनका जो वो था कार दर्जन में तो और स्पिनिंग करवाया और थोड़ा कंपेयर किया। इसी से स्पिनिंग है ये। हाँ हाँ ये चलता है। तो ये पहला जो स्पिनिंग है ये कार्डेल वूल है जो कि बीकानेर से मिल से होके आता है, तो उसका ये बीकानेर वाला वूल से इतने बड़े क्या पेड़ सकते हैं? हमारा जो कार्डेल वूल है जगह से मैं कार्डेल वूल का डिफरेंट एंगल से लिया है। ये क्या है 20 मिनट 55 मिनट आप देख 20 सकते मिनट 55 मिनट। हैं। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, तो जो वो तो ये जो बीकानेर मिल से जो कार्डेड वूल है इट इज टेकिंग अराउंड 20 मिनट्स एंड हमने जो अभी भेजा है वो अराउंड 55 मिनट्स लग रहा है और उनका आउटपुट के अकॉर्डिंग और रवि सर के पास नाम है तो क्वालिटी ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा उन्होंने हमें बोला, लेकिन थोड़ा टाइम का इशू है और रवि ये हमारे टाइम ज्यादा लगने का कारण क्या है? वो रवि सर वो है कि फाइबर पे जो है ना कि इसके जो ओरिएंटेशन काम है स्टिल नॉट अलाइज्ड एंटेंगलमेंट ज्यादा है अभी अलाइनमेंट नहीं है। अलाइनमेंट इसको फिट करना पड़ेगा वी नीड वन मोर डोर हम स्ट्रेचिंग डिवाइस है। माय पॉइंट इज सपोज इवन इन 20 मिनट पहले तो वूल तो यूज ही नहीं कर पा रहे थे ना, पहले वो बीकानेर भेज रहे थे जो कि अराउंड 1000 किलोमीटर है, ओके तो एक तो दूर भेजना भी पड़ता है और वो चाहते हैं कि जब स्पिनिंग यहाँ हो रहा है तो कार्डिंग भी नहीं होना चाहिए। नहीं तो सपोज इवन इफ जस्ट 55 वो तो थोड़ा बहुत और रिसर्च होगा तो 55 तो 35 40 में आ जाएगा आएगा, बट 20 में लाने के लिए तो ऑलमोस्ट मील बनानी पड़ेगी राइट कार्डिंग के लिए और तब अभी पता नहीं है एग्जैक्टली जो निकालने वाला जो टूल लिया है उसका जो कुछ फाइबर लिया है हाँ वो फाइबर कैसे बना इसे मतलब बिग मशीन कमर्शियल मशीन में बनाया गाड़ी में तो बड़ा मशीन भी होता है उनके पास सीधे नेकेड इन बोथ machine it will be much better exactly and what we are doing in a small machine
So इसमें तो actually the EDCAT process is not there also. This is one single. It's not coordination. But what we need is some other additional machine also. One is preliminary cleaning machine. First, generally what comes from the sheet, what is done? Generally, what we do, there is a first stage of cleaning. You remove all the dust and other particles. Then it goes to the cutting. After cutting also there is a process where we align the fibers. That is called beading machine. इसमें alignment होता है. Alignment के बाद then it can be delivered to this equipment. So mechanic में definitely they are going through all those three-stage processes. Therefore, it is not better than to spin 30 grams that take just 20 minutes. But as in this case, they are taking almost 3 times. Because these two areas are not there. Only the machine itself will not be able to do. Unless we have the broader machines, which is called milling machines, we improve alignment and reduce the entanglement, which is still left. But small scale milling machine. सर जो हमारा भी वर्कशॉप हो रहा है ना, बेसिकली इसी पर फोकस है कि कार्डिंग तो एक है, कार्डिंग से पहले क्या होना चाहिए और बाद में क्या होना चाहिए, there should be a holistic understanding. तो हमारे भी जो वर्कशॉप हो रहा है अप्रैल में, this is also one of the focus कि क्या किस तरह का टेक्निकल इंटरवेंशंस रिक्वायर्ड है बेसिक वुल को प्रोसेस करने के लिए इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. इसमें उनका क्या कमेंट्स है, ये जब रिजल्ट आया उन्होंने क्या बोला खाने वाले ने? जैसे बोलते हैं क्वालिटी वाइज दे आर मोस्टली सेम, only productivity is less. ना productivity less as far as this data is concerned, but what about 1000 किलोमीटर जाते हैं 1000 किलोमीटर आता है, इसमें उनका कितना खर्चा होता है? 2-3 लाख रुपया तो वैसे ही खर्चा टाइम और जाने आने में. हाँ सर, जाने आने में कितना टाइम लगता है? वो सर काफी टाइम लगता है. 1 महीने मतलब 6 महीने के आसपास. 6 महीने जो लगते हैं, तो यहाँ पे वो बैठे बैठे हो रही है, तो वो जो कॉस्ट उनका जो उधर चार्ज है वो कॉस्ट इनको दे दे. ऑफ कोर्स इफ दे आर वर्किंग फॉर 1 आवर तो उसको पैसा मिलना चाहिए. कॉन्सेप्ट भी उनके तरफ से यही है. वो भी हमें बोल रहे हैं कि थोड़ा ज्यादा भी टाइम लगे तो वी कैन कॉम्प्रोमाइज, बट ये अभी यहाँ हो रहा है तो वी आर हैप्पी एंड फीलिंग समथिंग पॉजिटिव अबाउट दिस एंड दैट्स व्हाई हम इस तरह का जो वर्कशॉप अभी हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसमें ऐसे खमीर के अलावा देयर आर मेनी सच ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर द कंट्री. सो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को बुला के इस तरह का कॉन्सेप्ट है वो उनको वर्कशॉप में बताया जाएगा एंड दे विल बी शेयरिंग आवर थॉट्स. आई वुड से जो पैरेलली इम्प्रूवमेंट हम सोचना चाहते हैं सोच सकते हैं, बट इसको हम एक्चुअली प्रचार करना चाहेंगे. बोलेगा आप करो पैरेलली वी आर डेवलपिंग अदर थिंग, वो भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा इफ यू स्टार्ट यूजिंग दिस. ये उनके लिए एक प्रपोजल हो सकती है. इफ यू यूज इट वी प्रोवाइड अदर मशीन. जब एक करके जब दिखा दिया बाकी भी एक्चुअली वो प्रचार करना चालू कर दिए हैं. तो उसमें उन्होंने क्या किया, एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जो सौर्यवान है, CSP करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, सेंटर फॉर कस्टमर रिलेशन नाम उनका. वो जनरली जो हर्डर्स होते हैं ना उनके लाइवलीहुड सिक्योरिटी एनहांस करने के लिए काम करते हैं. So that is the organization who is going to collaborate with us during the workshop, and they are collecting the lists of all the NGOs who are involved in wool textile processing, basically basic wool. और इसमें अभी हमारा फर्स्ट आइडिया क्या है क्योंकि हमने डेवलप कर दिया, तो अभी उनका ये है कि हम बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है थ्रू आउट द कंट्री, सब जगह से हम थोड़ा थोड़ा वूल मंगाएंगे और हम उनको भेजेंगे और स्पिनिंग के आउटपुट देखेंगे और उनसे भी फीडबैक लेंगे. सो दैट जब वर्कशॉप में सब लोग आए तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग और एक माइंडसेट के साथ आए कि ज्यादातर उनके नहीं करते हैं. हाँ
So in that case, according to Mr. Katwada, बोल रहा हूँ, there is a technology development and installation promotion from UMED, TDUPW. वो एक ready है ना सुजाता technology side. I am in that evaluation committee and they look for very good proposal. उनका chairman भी काफी progressive है, CSI है, लखनऊ की तो उसमें हम proposal क्यों नहीं बनाते? Should we hire somebody from the Amin can propose, we can be technology partner, or we can propose Kabir to be technology partner, and in fact they give two schemes. एक तो technology promotion का भी एक है, दूसरा उनका एक skill development के भी है. Skill development तो करोड़ों का जा सकता है. अभी हम technology development के लिए propose करते हैं, इसमें already we have developed this thing, and I'm sure it will be through almost instant. Almost instant. That is government scheme. हाँ, DSIR, Department of Scientific and Industrial Research. एक ये हो गया दूसरा उनके पीछे भी DHI also डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री तो वो भी पैसा देते हैं सर इस्तेमाल का जो दिया ना रोबो कैन के लिए वो दिया है फिर हमारा अच्छा चलो ठीक है तो लेट्स देन पीछे टू TDUPW MSME भी होता है बट MSME should we invite but I would say let's go TDUPW because I am in close touch with them. Sir, should we invite some representative from their side? आप कुछ नहीं जाने प्रपोजल अच्छा वर्कशॉप Because we are काम कर सकते हो बट दे में काम डिपेंड Workshop में इधर invite बट प्रपोजल बना के दे तो एक्चुअली एवरी 3 मंथ्स की एडमिन मीटिंग एक प्रपोजल बनाओ ठीक है फटाफट हमारे को भी सर ये वर्कशॉप जो हो रहा है इसमें हमने लिस्ट तैयार किया है डेट तो हो गया ना 24-26 आज 24 से 26 अप्रैल तो इसमें 2 दिन ही वर्कशॉप होगा तो सर ये सजेशन लेना था आप लोगों का कि वेदर वी शुड डू ऑन 24 25 और 25 ये जो प्रॉपर्टी लॉस हुआ ये किस तरह से हुआ कि यान बार-बार टूटा था या टूट नहीं रहा था सर वो वही एंटेंगलमेंट ना ओरिएंटेशन नहीं है तो बार-बार उसको हाथ से सीधा करना पड़ रहा है आप वीडियो सब देखो वीडियो टूटा होने लगा है बाकी टूटा नहीं क्योंकि आप हमें जो रिपोर्ट दिया उन्होंने तो जब जो कार्डिंग के लिए उन्होंने वूल डाला उसमें वजन किया 30 ग्राम उसके बाद आउटपुट उनका आया अराउंड 26 to 27 ग्राम जो यार्न था तो कुछ अलग तो ज्यादा नहीं हो रहा बीकानेर वाले ने 1-2 ग्राम ज्यादा है परसेंटेज वाइज अगर देखें उसको जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है और जो लॉस ऑफ मटेरियल है उसमें कितना फर्क लगता है करो एस्टिमेट करना पड़ेगा सर अभी इनिशियल स्टेजेस में ही है तो वी आर डूइंग दैट एस्टिमेट्स पकड़ काटो या रिजल्ट किस वजह से एंटेंगलमेंट मुझे समझाओ मैं समझ नहीं आता रवि सर entanglement is the entanglement between the fibers. Like your hair is entangled like early morning. राइट Similarly, it gets entangled. Fibers get entangled. Now, because of the guarding problem itself, initially it's high entangling mass and breathing, starting. राइट Then through guarding process, we remove little bit of entanglement, not completely. मैं ना करूं Then we go through another process, it further gets removed. So, step by step, the entanglement is removed, it becomes completely aligned. By the time we are supposed to make the yarn. So, entanglement if you try to reduce in one step, I don't impact. But then it has this hair example. But you take the hair example, you apply shampoo, you clean it up, and it becomes straight faster. Yes. So similarly, we could have some Actually, what we said earlier. Healing process together with the straightening process can also give us a. Actually, that is linked to the chemical grading also, which we are not doing. But in the actual way, we will do chemical grading, then mechanical grading. Fine. Then it will be created guarding. It's a very, very long and lengthy process. The wood screening and process screening, like Ramon's is very good, is very good. It's a huge and lengthy process. That's why the video finally comes to 4%. देखो मैं हाथ टच करने से ब्रेक हो गया So, because of not good quality, it's not very old. It is very, very, very coarse. See, I can also have a cotton rolling bed. So वहाँ पे cotton का भी ना quality है, depending on how well it can fix and how clean it is maintained. अगर cotton को भी better to
the fiber length and Kindness. so what you're saying is essentially that in addition to this carding process, some pre and post processing will get to the same level as the recurrent. मतलब But finally इसको जो utility है वो काफी use कारपेट बनाते हैं। So this is made for carpet. After this is post, this is a good label. Apparel products are very much. Was it not they are thinking of noise and sound protection? That is a different topic. That is a different. Or maybe we can get guidance. I think that will be used for some. I think ये TBUP के लिए डालते हैं and maybe there are many other DSPs also good but TBUP जब से is implementable right तो यहाँ पे हम implement करेंगे और इसके एक और यूज मुझे नजर आ रहा है डिपेंडिंग ऑन कॉस्ट अगर हम जीरो एनर्जी ग्रेडिंग या फिर सैंपल मॉडल बनाना तो इंसुलेशन के लिए वही बात है Insulation insulation का और प्रोडक्ट The another project was with Hunashala, we were very close. उन्होंने एक बिल्डिंग इंसुलेशन मटेरियल के तौर पे इसका एप्लीकेशन प्रपोज किया था। क्योंकि नेशनल फाइबर है इसमें एस्बेस्टॉस वाले सारे हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं है कॉस्ट अगर हम कंपेयर करें तो फिर वी कैन वो बात फिर कर दिया मतलब उनको हमारा ये काम करके फैसिलिटेट करना रिसोर्सेज का मार्केटिंग the facility or the faculty would guide them in testing and research. तो वो जो फातिमा का सर फातिमा का हमने उनको कांटेक्ट करवाया एक हमारा वर्कशॉप भी हुआ अहमदाबाद में जो बोल रहे हैं उनको कोविड से जस्ट पहले उसके बाद उनका कुछ कांटेक्ट हुआ लेकिन फिर कोविड की वजह से थोड़ा सा कुछ करना पड़ा so that is also affected but I mean for the faculty have some other contact ये तो क्लासिकल जीरो एनर्जी बनाई ना फिर ऑलमोस्ट के अंदर we do it हमारा someone has to take the fee so उधर बोल रहे हैं Hunashala is our NGO partner and अगर सर आप मतलब इसको एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो they are very much interested because कोविड से पहले हमारा काफी प्रैक्टिस हुआ है चलो फिर दोबारा डेवलप करने की कोशिश करो They have contributed substantially to the low-cost housing after the earthquake. Sure, next. So, can I ask? Yes. Very delicate. Shashank has a question, बताओ. Like, if we look at the videos, she is using both of her hands. On the right, with right hand, she is putting energy. That is like the effort to pull out the process. On the left, with the left hand, she is trying to adjust something. Like on the with the left hand, it's not about creating energy, right? So it's not. Can we automate that process or something? Like emulate what the left hand is doing with something. But generally, what लेगा वो solution को that is a big question. I mean, go to the previous slide. वहाँ पे मैंने न्यू मॉड्यूल चार्ट का भी देखा है. वो न्यू मॉड्यूल चार्ट का फोटो देखा कौन सा? क्या बात है उसमें? मैं तो अलग ना हो. वीडियो में सबसे वीडियो में चला. सबसे वीडियो में चला. लेफ्ट. हाँ. तो वैसे चलवा दे भाई ये हाँ ये जो राइट हैंड साइड में देखो और जाने दो. हाँ जैसे न्यू मॉड्यूल चार्ट I can see. So why are they using it? New model chakra नहीं होगा. There's some other reasons. Now what Shashank is telling that if I wanted to make it What power, I was telling you, this is existing in the case of wire yarn. Wire yarn material, if you go from Kerala, they have seen that there is a good old technology. It's called new technology. Basically, that what this lady is doing, she is taking her hand behind. So there is a supply of government. And the charkha is basically driving the spindle, which is continuously turning and generating twist. And the hand is actually doing two jobs. One is holding this bunch of fiber, and with the fingers, she is actually making sure that the right amount is delivered continuously, that the thread is uniform, as far as I say. At the same time, she has to take the hand back because
they are generating so many plants in single line. So if you keep the hand there all the time, then it's fixed line, too many plants put there. We have to keep this thing, this livelihood. So it has to take it out. Right? So many plants get distributed over it. Over certain lengths. But our Indian plan, the number of plants we can more or less fixed. That is the skill. Design is happening. And at what rates he is going to take it behind. And this supply of the raw material. Controlling it by the people. This is can be done by machine also. But entire thing very costly. Then they cannot afford it. Secondly, sir, is NGO handicraft, like handicraft when but their USP is handicraft. They NGOs USP is handicraft. It's a handicraft means there is no power source to be utilized. Generally will fall in the category. If you put a motor, then they will not get all this support system of the government and everything. Otherwise, it can be put, some people want to take it, we will not know it. If machine can be made, machine also available, we can move machines also. But it will be very costly. And they cannot buy. Khadi, I think there is this, people were not accepting solar powered Khadi, solar powered. By definition, solar powered truck is also not Khadi. Khadi has to be completely hand-spun. Yeah, it has to be hand-spun, hand-woven. But the present government probably is accepting that solar powered with solar and then motor. There is no human intervention. But it is going on now, this government is continuously very low. So some amount of support now has happened sometimes, but originally Khadi said that it is not Khadi being monitored as it should I think that is not a very difficult thing. Even meal-related practice can also be. You want to make it big, you do it. It depends upon the ways which are there, how close they are placed, and the yarn that you make, how full the yarn is. So how much air is trapped between the variety the yarn is getting fuller. So there is a lot of white between. So in Khadi yarn, because the tension is less, the white space is more, and therefore it is little bulky, and it is breathing, all because of that. And trades are very much close to each other because handloom is the amount of trust that the weaver can give is much less compared to a machine. So trade to trade distance is much more. And the delivery to it also in order to receive as well. Because people put less number of trades on unit there, then when production by in terms of meter will be more. So they want to cheat also. Because they are paid as per how many meters they are made. I can make more meters if I have less number of yards per unit. So that is also it is. So many ways they are also trying to cheat. Because they are also on part they want to produce 3 yards or 4 yards. And there is no check. Therefore, Khadi has so much variability in terms of quality. Also, वो खाने की बात कर रहे हैं। We have कुछ मसले कर दिए बहुत वो कैसे आ रहा है? वो हाथ से कैसे बना है? तो मशीन का इतना फाइन यहाँ जो है मशीन में बात करें। So there is some uniqueness. There are some खादी यहाँ जो अगर क्वालिटी इससे लिया जाएगा they are made from extremely fine. Now these yarns are so fine. The machines cannot be, machines generate much more stress on the fibers. So the thread will get continuous. If I want to go, see their threads will be having around 40-50 fibers in the first yarn. Whereas normally the yarn will be having almost 150 fibers, 200 fibers in the first. So the question of the yarn depends upon how many fibers are there in the first. If I want to make it fine, so I have to go for fine fibers, and then I have to reduce the number of fibers in the first question. So you come to a stage where you have 35 to 40 fibers in the first question. Now,
The group of 30-40 biogas is so big that if I want to steal the engine and the machine, whatever I do on this machine, say it is continuous to operate. So no way trying to steal that time. Therefore, count-wise, you see, this is almost 200 count, 150 count. No way you will produce more than 800 count. Because it is not, they are not able to do it. Because the machine cannot be done, or whatever the machine configuration is there, it cannot be used. They can only produce like that. And on the Indian system. I was asking about earlier when you go to buy a party, you only get the report up. Now that we are getting a variety, something, quality that we are getting, it's like really. The so-called Khadi in Bombay, they're all schools, they're all right. They're all coming from companies. Stamping as Khadi and even it is being sold as Khadi. Now, lot of Khadi, even in the Khadi or distribution, they're putting power looms and making product. That is in the back here. In the front here, Front portion, it is normal handle. no. As you go to the other side, there is handle. That's what power loom is. Power loom. So these things are coming. And you buy it and you apply 3 like it's not happening. Because they want to get that government benefit as being a Khadi, but at the same Now, time. we are doing a project this year only. How to identify whether it's true Khadi or not? That project is just now going on. So how to identify? Basically characterize the fiber yarn. It is small piece of fabric, how to know? It is true Khadi or not? There's a lot of cheap. Vision techniques can be attempted and then measuring the force and everything, okay? Variability. Variability. Anything you are trying to find. That's So one of the things, the 200 count, some reason the Americans have, in the premium range, golden products that are actually guaranteed to be 200 count. No. Nobody else thinks that. I mean, not possible. The fabric does look distinctly differentiated, very See, easy. that is what they do. They make the yarn finer by chemical process. So what we do is they take yarn to start. Make a fabric. And then there's a process by which I can make the yarn finer. What we are doing is No, it is consistent with it. We are making nano fibers also. So nano yarn is also there. this is just 200 count. I have to come across and I found that it is not available. There is a process, chemical process through which you can basically partially weld the fibers. There are bicomponent fibers. One of the fibers can be completely removed. And you will get to one fiber only after making everything. That will be Sure. Yeshwant. that is also good. That technology is there. सर वो जो डेट्स के बारे में बताओ। 24 से 26 मेरा सजेशन होगा 24 को आफ्टरनून शुरू करो और 26 को मॉर्निंग खत्म करो। 25 का फुल डे रखो, 3 दिन रखो। द रीजन आई एम टेलिंग 24 टीचर संडे हम सैटरडे शुरू करेंगे तो संडे मॉर्निंग तक किसी जगह पे पहुंच जाएंगे, फिर इवनिंग जाएंगे तो मॉर्निंग पहुंच जाएंगे। आफ्टरनून प्रोग्राम शुरू कर सकते हो, यू कैन गो अप 7 8 o'clock also in case possible। नेक्स्ट डे तो पूरा रखो और नेक्स्ट इज मंडे मॉर्निंग खत्म कर दो, so that we can travel in the evening. So that Tuesday we are on the job. तो ये मेरा सजेशन है, but this year I think if extend is the main, so बस Chaturanga has to comment. 24, 25 और 26। My arrangement looks all right. हम कैसे जाएंगे? फ्लाइट से जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे? रवि सर तो फ्लाइट का सजेस्ट कर दिए थे कि यहाँ से राजकोट जाएंगे फिर क्या I was asking you to explore, otherwise by train is also perfectly fine. नहीं, राजकोट तो अच्छा कॉम्बिनेशन है। राजकोट से कितना दूर है? So we can actually travel by road from Rajkot. So Rajkot you can find that. So that's one point. पर राजकोट का फ्लाइट कितने है? 1 या 2 है सर? ट्रेन है सर, अगर ट्रेन से जाएंगे तो 24 घंटा। नहीं, रास्ते में हम अहमदाबाद जाके अहमदाबाद से ट्रेन लिए थे। नहीं, अहमदाबाद से ट्रेन लिए।
Last time we went to Ahmedabad, and from Ahmedabad again we took a train. Right. That is a good combination also. Good. बरेली को जो ट्रेन चलती है वो तो डायरेक्ट ट्रेन है, कितना टाइम 24 मिनट, 21 से 24 मिनट। नहीं, राजकोट में राजधानी जाती है। मतलब सर अगर आप ट्रेन मेट्रो कह लो डायरेक्ट कितना बजे ट्रेन है? 11 बजे सुबह है, दूसरे दिन 9 बजे पहुंच जाते हैं। चलो सोच लेंगे, but that's what I'm saying. Train is also good, but That's what I'm saying. If you flight में जाओ, train में जाओ, either way you should be reaching by 9:10. 9 मतलब by the time you reach the guest house or whatever, it will 10-11 hours. ट्रेन में delay भी होगा। 12 बज जाता है। तो you start in the afternoon, no? और एक इशू है, उसमें ये अपडेट के मायने में दोपहर में बहुत दूर चलता है। उनका सजेशन था कि हम लोग पहला सेशन मॉर्निंग स्टार्ट करेंगे, फिर 3-2 घंटे का ये न्यूज़ टाइम का देख लेंगे। उसके बाद वेरी गुड। तो 24 को इवनिंग में शुरू करोगे ना? इवनिंग में शुरू करो ना, 4 बजे तक 4-5 बजे जो भी शुरू करना चाहते करो, फिर 25 को हॉलीडे करके 26 को लू से पहले हम करते प्रोग्राम, और लू के बाद हम जाने शुरू कर देंगे। ठीक है? वहाँ से दूसरा गाड़ी का टिकट कितने बजे? ठीक है, तो फिर ट्रेन से जाएंगे तो तुम्हारा ट्रैवल खर्चा कम हो जाएगा। ट्रेन से जाएगा तो तुम्हारा ट्रैवल खर्चा कम हो जाएगा। सर सबसे ज़्यादा ट्रैवल में दिख रहा है। इशू नहीं होगा। इंटरेक्शन टाइम भी ज़्यादा हो जाता है ट्रेन के अंदर। ये प्रॉब्लम है। मतलब आप जो बोलिएगा वो कर लेंगे। रूट ऐसा वो बहुत लंबा है, इधर अहमदाबाद जाने, अहमदाबाद से डायरेक्ट फ्लाइट भी बॉम्बे जाए, बॉम्बे से मतलब क्या है सर, यहाँ से बॉम्बे जाना पड़ेगा, बॉम्बे में 10 घंटा बैठना पड़ेगा, उसके बाद मतलब दूसरा फ्लाइट चेंज होगा। फ्लाइट तो यहाँ से बॉम्बे तो सारा टाइम फ्लाइट है, तुमको 10 रुपये में बैठना बॉम्बे। बॉम्बे से कुछ नहीं बॉम्बे से कुछ बॉम्बे से घुस कर कितना फ्लाइट है, उसके 2 घंटे पहले 3 घंटे पहले पहुंचने का फ्लाइट है। नहीं, भुज में से एयरपोर्ट है। एयर इंडिया का जो रूल है ना, भुज में एयरपोर्ट है, चेक करो। देखो, last time I went by this thing by flight to Ahmedabad and Ahmedabad to Delhi. It was a very good combination. Like I and Ravi Paul went together. God. तो आप सुबह इवनिंग को फ्लाइट किए थे 5 o'clock I think. By 7 I think we reached to Ahmedabad. वहाँ पे हम थोड़ा सा No, we took a flight in the afternoon. We spent a couple of hours in Ahmedabad. We went to that garden. Park. So we had about 3-4 hours in Ahmedabad, 5 hours in Ahmedabad. Right. So we spent a few hours and then we went to this railway station and took the Right. रात को 10 बजे ट्रेन है। आते वक्त भी बहुत अच्छा हुआ था, हमने आके या ट्रेन में वहाँ पे स्टेशन में कुछ एग्जीक्यूटिव गेस्ट रूम करके था, 100-200 रुपया दिया, नहा धोया सब करके, फिर 12-2 बजे की फ्लाइट थी, देके शाम को। So I think that will decide later, not only about that thing, इसके जैसे कंटिन्यू कर लेंगे, बाकी प्लान करो। Around 35 participants we are expecting. हाँ, इसको क्या डिस्कशन करना चाहते हो? यहाँ की बजट इज अराउंड ठीक है, पैसा है तो करेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्या डिस्कशन है? वेडिंग कार्ड। This workshop is not only on this, you will come. हाँ सर, तो इसका जो है ना उसके साथ हमने ये भी प्लान हाँ किया वो भी है। सेकंड डे है, आप लोगों का फील्ड विजिट है, वो पार्टिसिपेट करें। आने maybe not planning a workshop for that also. सेपरेट वर्कशॉप इज नॉट सेपरेट, मतलब एक तो बात की थी, हमने दोनों वर्कशॉप कॉन्करेंटली या पैरेलली करेंगे। वो पैरेलल ही होगा। जो हमारा फर्स्ट डे का जो हम फर्स्ट हाफ रखते हैं ना, उसमें जो हमारा प्रेजेंटेशन सेशन होता है, तो प्रेजेंटेशन में जैसे सलाह से हमारे टेक्निकल मॉडल के बारे में बताते हैं कि आप भी बन करके नहीं जो भी है, उसके बाद प्रेजेंटेशन का पैरेलल सेशन कर देंगे इन द केस इफ यू से सो। पैरेलल सेशन नेक्स्ट डे में पैरेलल सेशन कर देंगे, यू फील दैट वे। एक ज्यादा ये डिस्कस करें तो वो ज्यादा वो डिस्कस करें। वो सर पूरा एनजीओ का ये था कि ना हमारा फोकस डाइवर्ट हो गया है, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक वर्कशॉप का फोकस किया है उसमें, और जितने सारे प्रॉब्लम्स थे रिलेटेड
wood cutting. So those things were already discussed there. और फिर से types हो गया और wood cutting का जो हमारा focus है इसमें है कि out of all the technologies we look at, एक तो वो mirror वाला हो गया था, that is something which we did not follow. But carding का follow up हो रहा है और furnaces का follow up है. So we know हम जब जा रहे हैं, we should basically address both of those problems. उसमें सर Which way we schedule it is something that we have to. सर रिसेंटली जब मैंने विजिट किया उनको मैंने यही बताया कि आपने जो हमें प्रॉब्लम बताई थी वो एक एंटिटी है they built in for pottery and then they said कि claim में हम काम कर रहे हैं and secondly एक कोई जो कांच वाली थी I said I will be following them up तो बरखा जी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया तो हम चुप हो गए एंड उन्होंने जो अहमदाबाद में लोकेशन बताई क्लस्टर है कांच वाला फिर था एक बंदा है then sir this guy Gadiji told me that we decided with each other that आप pottery को बनाए LNDC के लिए तो I said Gadiji आप अचानक आप pottery में आ गए so he said कि yes बस हमें ये फंडिंग है और हम इनकी हेल्प करना चाहते हैं because sir if you recall recently जब मैं गया हूँ he was telling me the other guy क्या नाम है जो बोल के काम कर रहा है Sorry. हाँ so that guy said कि रहा शीप शेयरिंग का भी बहुत दूर है बट क्या आप मोटा बना सकते हैं कि दूर छूट जाए मैंने कहा यार देखो तुम जाके देखो आप हिमाचल में इतनी ठंड पड़ती है और वो पूरी मैकेनिक शीप शेयरिंग करते हैं मैं कहा जो वहम है ना आपके मन का फिर सर मैंने आपकी स्टोरी बताई जिस तरह उन्होंने ट्रीट किया आपको मैंने कहा वो कह रहे यहाँ एक ही शेयर था रिटायर हो गए मैं कहा आपको पता है हिमाचल में कोई सरकारी शेयर नहीं है बट उनके जाने से पहले उन्होंने लोकल्स को इतना ट्रेन किया कि वो सब प्राइवेट शेयर होते हैं कमीशन बेस्ड काम करते हैं आप वो मैं तो मशीन वालों को सब पता है इसके बारे में वो क्यों नहीं है मॉडल लेके आए मैं कहा अगर ये खराब हुआ है डिपार्टमेंट की वजह से इस सेट की ओके मार्च में हमारी शेयरिंग होती है मैं कहा आप हमें जब मर्जी बुला लो जितनी मर्जी बुला लो हम जितनी मर्जी हर्ट्स रख लो वी विल ब्रिंग इन आवर शेयर्स हम सब कुछ ना कुछ करके आपके पास पहुंच जाएंगे तो सर मतलब याद है अगर याद होगा घटित जी ने शीप शेयरिंग लेनी थी उन्होंने हमारे साथ कितना नेगोशिएट किया पैसे कम कराते बट लेटर ऑन फिर वो सर बैक ऑफ कर जाते हैं अभी इसमें हम ये पढ़ाएंगे कि नहीं करेंगे ये बताओ तो भी कोई सर्विस तो ये तो सर यू आर सजेस्टिंग ये सर तुम्हारा सजेशन हाँ मेरा सजेशन ये है कि सर रीजनल वर्कशॉप तो डेफिनेटली उसका एक पार्ट नहीं in that case what you can do is the focus could be this one उसमें हम बताएंगे और those would be interested उसके साथ अलग से interaction session रख कर जाएंगे So what I was saying is, it can be one after the other or it can be parallel, depending on. what he is saying that emphasis खराब हो जाएगा ये बोल रहे हैं तो सर एक और सजेशन था मैं मतलब ये हमीद के सजेशन से बोल रहा था कि वी कैन डू मतलब एक वो जैसे 3 दिन का हमारा वर्कशॉप है तो हम क्योंकि हमें 2 दिन के आसपास कार्डिंग पे चाहिए टाइम 9 से 10 घंटे हम कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आना है तो थर्ड डे वी कैन कीप इट एज रीजनल वर्कशॉप फुली तो मैं बोला उनको कि हमारे जो रवि सर और संगीता मैम आ रहे हैं वो तो वो लेकिन एक्सपर्ट नहीं है तो उनका 2 दिन वो क्या करेंगे तो ये भी वो वन डे लेटर इन देते हैं हाँ तो आप लोग थोड़ा सजेस्ट कीजिए मतलब ये जो वाले काम है कांच की है बटर की जो भी है इनके लिए तो हमें इंटरेस्टेड नहीं है और कोई इंटरेस्टेड नहीं जो हम कॉल देते हैं ना सर एक पूरी एनजीओस की जो कॉल होती है आसपास के लोगों की जो कॉल होती है वो इम्पोर्टेंट है सर उनका पार्टिसिपेशन जैसे विलेज में जो गोल रिफ्लेक्ट हो रही है क्योंकि ये उनका फोकस है तो एक और इश्यू है इसमें the pottery kiln workshop cannot be short one because basically what you are going to teach them is how to build a kiln with the kind of trap walls and those things. So if you want to actually demonstrate, then it is going to be much longer. So even if you have all the people who are going to build it in place and all the material ready, it's going to take a 2-day workshop. Sir, can we go for a parallel work की
एक तरफ वो लुगाड़ी वर्कशॉप हो रहा है That's what I was telling you. So depending on the interest and depending on also location देखना पड़ेगा. When if you want to do the workshop or do the workshop in the same venue, or pottery has to be done in a different place where the mortars are already there, that cluster is better done there. बस बेसिकली उनके तरफ से यही कम्युनिकेशन है कि जो सेकेंड डे हम वर्कशॉप पे रखेंगे ना, उसमें जो पॉटरी से रिलेटेड काम है उसके लिए फील्ड विजिट होगा, और फील्ड विजिट में ट्रेनिंग होना हो, चाहे डेमोन्स्ट्रेशन होना हो, चाहे 4 एनजीओ को वहाँ बुला के ट्रेनिंग करना हो, ये सारे काम होंगे। लेकिन लेटेस्ट आई सपोज द फॉलोइंग 24 का जो इवनिंग सेशन है उसका कवर रखो, वो कवर है। 25 का तुम जो पटड़ी में चले जाओ, ठीक है, ये कमिटमेंट है क्या? 26 का हम भी पटड़ी में तुम उधर खत्म कर दो और इधर का ये खत्म कर दे। I don't think there is no need to come back and do the joint session. Yes. No, I don't think this is required. Just do one joint session and then two separate ones. I think that's a good one. And 2 different venues. 2 different venues and 2 different communication. Then you should plan for a real demonstration of how that kiln is built. Right. Yes, so we will try to construct that kiln which we are thinking. And actually it is 130 kilometers away from. No, that's fine. So you will travel. And then we can meet back at some venue which is. Income you get also, no? वहीं भी रह सकते हैं। सब चले जाओ अपने ऑफिस आ जाओ, ठीक है, Income सबका अलग होता है। ठीक है, ओके ओके। सो पैरेलल एक्टिविटीज, उसमें हम कॉलेज जॉइंट वर्कशॉप और 2 सेपरेट वर्कशॉप, आज 2 सेपरेट वर्कशॉप भी बोलोगे तो अच्छा है, और एक ही स्टेज पे 2 वर्कशॉप हो गए। वो भी बोलिए, मतलब इस तरह से जैसे रवि सर ने बोला था कि पैरेलल इन फर्नेस का ट्रेनिंग डेमोंस्ट्रेशन, गुड गुड। तो इट इज दैट की फील्ड एक्टिविटी वो वाला वो कोऑर्डिनेट कर लेके हमें दोनों एक साथ कर लेंगे, बट यू विल एम्फसाइज दिस पार्ट, यू विल एम्फसाइज दैट, ठीक है। सर वो शीट शेयरिंग मशीन का जो बोल रहे हैं, ये भी मार्च में वो करेंगे कि मार्च शेयरिंग आगे से डिस्कस कर लेंगे, पहले फिनिश कर लेंगे, बिकॉज़ आई थिंक अनदर 20 मिनट वी शुड रैप। So wedding card से राजा सर ने लास्ट टाइम बुकिंग सिस्टम ऐड करने को कहा था, दिखते रह सकते हैं, तो सर हम वो इसको उसी तरह इंकॉर्पोरेट करने की जस्ट इट्स ट्रायल है। प्लस सर जो लिमिटेशन उन्होंने बताई कि 6 ग्रुप 4 ग्रुप 3 ग्रुप से जो भी इंटर कार्ड पड़ी है ये डायमेंशन उन्होंने भी स्टिक की, तो मोबाइल ये बनाते हुए सर ये इसमें ये था नहीं हुआ है सर। इसको हमें 4/6/3 रखा है, ऊपर सर ऑनिंग लग रही है, वो नॉर्मली गर्म जो हो रही है, तो ये सर दोनों ऑनिंग रोल होने के बाद ये खड़े वाले पिलर हैं, ये फोन, तो ये रोल होके ऐसे वाले चला, प्लस इसमें व्हील लगाया है, साइड में डस्टबिन है। प्लस सर अभी क्योंकि अभी हमने थोड़ा ग्रेड साइज छोटा किया है, हमारी एग्जिस्टिंग रेट 500 बाय 325 बाय 150 500 325 150, ये हमने किए हैं 100 बाय 300 बाय 200, ये मिल रहा है मतलब दिस इज द स्मॉलेस्ट साइज, ये परफोरेशन नहीं आते हुए 100 बाय 300 बाय 300 100 200 100 300 200 एंड सर ये रेंज स्केल रखने की कोशिश की है सर, उसका हाफ है 1/4 आगे क्या हो रहा है, इतना है कि इसका हाफ जो है ये कस्टमर के लिए है, तो दूसरे वाले वेडिंग कार्ड तो ये नॉर्मली स्टेक के कम से कम 15-20 कस्टमर्स को सेटिस्फाई करे, उसके बाद उसको रिटर्न करना पड़ेगा। ये सर तो देखो ये साइज कम इसको कैसे डिसाइड किया सर, ये कम ऐसे नहीं है, मतलब वो जो अमित का जो इनपुट था वो हमें हमेशा कहता था एक रेट हाफ कर सेंटर से पार्टीशन, हां बट वी आल्सो नीड टू इन्फॉर्म कि ऐसा कोई डिसीजन आप ले रहे नहीं सर, ये डिसीजन नहीं है, जस्ट हमने रख के देख रहे थे क्योंकि उसके अंदर जो फैंस लगे हैं, आशीष रोटेट करिए, ये कूलिंग सिस्टम के ये कूलिंग सिस्टम है, ये सर जस्ट रिप्रेजेंटेशन है नॉन फैन, ये साइड में सर हनी कॉम सिस्टम है। अभी सर इसमें ड्रिपिंग और नीचे छोटी ट्रे और टैंक, हमारे नीचे से 8 से 9 इंच स्पेस बच रही है, साइडों में 6 इंच। तो जरूर ऐसा है कि तुमने आइडिया को पकड़ के अच्छा एग्जीक्यूट किया है मॉडल के अंदर, लेकिन आई एम नॉट थिंकिंग कि पूरा का पूरा हम
So they were working. But man, that कुछ pure hardy vegetable like aloo or प्याज, they can stay without this cooling. And some can stay with cooling. Only one portion will have this cooling arrangement. और उसका एक interest area है कि जो cost इसमें आएगी, इसको limited करना है. अगर किसी को ज़्यादा चाहिए हो तो दो लगा, but अपनी तरफ से only half the part को cover करना है. वो हाफ सेंटर में छोटा से पार्ट है, जितना सर नीचे उसके जगह है वो इतना ही पूरी है, सारी नहीं है, सारी नहीं, बाकी किधर वो सारी अगर करेंगे तो सर और फिर और पूरी 6-7 इंच ऊंची है। ये देखिए सेंटर में से जितना स्टोरेज, ये इसमें ये भी वो ऊपर वाला स्टोरेज पट्टा हटेगा या नहीं केस, तो सर ये हमने अभी एल्यूमिनियम सेक्शन यूज किए थे, हम पाइपिंग भी कर सकते हैं। एंड इसके सेंटर में कितने ग्रेड आए हैं? ग्रेड छोटे साइज के जो ग्रेड आए हैं 100 बाय 6 जो बड़े वाले किसी ग्रेड आए वो सर 500 325 की रहेंगे। हाउ मेनी ग्रेड्स का सर सपोर्ट बढ़ेगा? सर इसके अंदर जो जगह है ना वो सेक्शन लगाने के बाद 525 बाय कितने 1100 कितने 1112। अभी जो बड़े वाले ग्रेड कितने आएंगे? वो 4 अभी जो पूरी यूनिट आपने बनाया है 4 ग्रेड आने तो बहुत अच्छा है। 4 ग्रेड आएंगे तो बहुत अच्छा। हाँ so this one is 6 है। ये वाले कितने हाइट एडजस्ट करनी पड़ेगी, हाइट क्योंकि हमारे नीचे स्टोरेज जो है ना सर वही नहीं वो ठीक है, बट उसी एरिया में बड़े ग्रेड 4 आ रहे हैं, छोटे कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। अभी सर इसमें नहीं सर अभी इसमें वो नहीं लगाया, अभी सर एक नीचे पानी ड्रिपिंग के लिए अब वो करना पड़ेगा पानी की टंकी बिलो वो जो आने को लगा रहे हैं वो नीचे वो चीजें क्योंकि वो बहुत ये करने में थोड़ा टाइम। मैं सोच रहा हूँ कि जो आपने मॉडल बना लिया इसका एक डिस्कशन हम कर लेते हैं। हाँ उसके बाद इसका एक प्रोटोटाइप बना के इसका वाटर कंजम्पशन देखते हैं कि वाटर कंजम्पशन है कितना, राइट? उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रे और स्टोरेज क्योंकि दोनों चीजें वेट कट करने वाली हैं, राइट? वाटर कंजम्पशन आज के वेदर में चेक करेंगे तो समर का कुछ भी लिस्ट तो we will then base it like we need some effectiveness and then we will use it for the worst case and then especially ये लोग एक बार बीच में बात हुई थी जो फॉर द कंफर्ट ऑफ द वेंडर टर्न देने के लिए, तो वो इसमें हो पाएगा क्या? फॉर द कंफर्ट ऑफ द वेंडर कुछ फैन। हाँ सर वो तो कभी भी ऐड कर सकते हैं, मतलब ये होगा ये what you are having right probably the air that is evaporated to coming as a shower on the window that has not been conceived here. A separate fan definitely is in the works. अच्छा सेपरेट फैन मतलब वो जो बैटरी चार्ज होगा उससे आएगा। वो नीचे वाली स्पेस की पीछे से वो भी that got another radiation there and air being released after the plates and it somehow be directed to हाँ मैंने ये सोचा कि वहाँ पे थोड़ा सा यू शेप का डक्ट लगा दिए सीधा सीधा anyway उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होगा सर। ये सर अभी बैटरी प्लस जो भी हम कुछ और रखना चाहें साइड में सर देवेंद्र जी हेलो जी सर देवेंद्र जी इसका हाँ आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये इसका स्टीयरिंग कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? स्टीयरिंग इसमें नहीं है, पुश कार्ट ही है। पुश कार्ट है पीछे लिफ्ट एंड फैन मैकेनिज्म है। अच्छा मिसिंग दिख रहे होंगे वो अभी बाहर से लगाने हैं। अच्छा जनरली में लिफ्ट करके वो टर्न करते हैं, उठा के लिफ्ट करते हैं फिर टर्न करते हैं, इसमें भी यही है? नहीं जनरली नहीं करते हैं वो, अभी हमने डेवलप किया है ये। नहीं जो नॉर्मल वेंडिंग कार्ट्स होती है ना जो लोग ठेला चलाते हैं वो टर्न करने के लिए लिफ्ट करते हैं फिर टर्न कर पाते हैं। हाँ उसका कुछ सॉल्यूशन देखा है क्या इसमें? उनके हाथों में छाले हो जाते हैं। हाँ तो उसके लिए हाँ तो उसके स्टीयरिंग के लिए कोई सॉल्यूशन देखा है क्या इसमें? ये तो सॉल्यूशन है सामने दिख रहा है तुम्हारा। अच्छा यही वाला सॉल्यूशन है, ओके यस लिफ्ट एंड फैन मैकेनिज्म। अच्छा ओके ओके दबाओगे तो इट विल बी लिफ्टेड अप
and then you turn. Video है तो दिखाओ. और वीडियो है तो दिखा दो. तो मैं थोड़ा सा पिकिंग कर देता हूँ. एक आई थिंक कोर कमेटी का आई थिंक इट्स ड्यू ऑलरेडी, राइट? तो एक बार टेंटेटिवली मार्च में टारगेट रखिए कोर कमेटी. ऑनलाइन ही करना पड़ेगा. फिजिकल करोगे. ऑनलाइन करना पड़ेगा. तो डेट टेंटेटिवली डिसाइड कर लेना. Because April will कर सकते हैं. First week of April. Madam wants to come, she can come also. आज क्या तारीख हो गया? 19 मार्च. 19 फरवरी. फिर मार्च में करना चाहिए तो 18 March is Holi. So that's a long weekend. नेक्स्ट वीकेंड में मेरा टेंटेटिवली बैंगलोर में प्लान चल रहा है. तो 23rd को कर सकते हैं, 22nd को कर सकते हैं, 21st को कर सकते हैं. तो वो वाला उसमें मंडे टू वेडनेसडे कर सकते हैं. तो इफ रवि संगीता एंड अदर्स इन जनरली ओके, आई कैन प्रपोज 23rd को आफ्टरनून करे क्या 3 to 6 टेंटेटिवली. वेडनेसडे, Tuesday, Wednesday, 22nd, 23rd. पता नहीं होता, सेलेक्ट मीटिंग हो जाए, ये हो जाए. अच्छा ये भी पॉइंट है. तो 21st को से The whole problem is you have a Monday, Tuesday, Thursday class. Right? Wednesday अगर eliminate कर दोगे तो Friday बच रहा है. तो उस सब का तो छोड़ते हैं. फ्राइडे करोगे तो देन इट हैज टू बी April 1st को करें. April 1st को टारगेट रखो. फ्राइडे लास्ट वर्किंग डे. Last teaching day, हाँ. Monday को रखो सर. ये last teaching day है तो Monday will be free. तो देन 4 तारीख को करें. 4 तारीख मंडे. टेंटेटिवली 4, 5 2 दिन तक रखे. 4, 6 4th अप्रैल. ये चेक करके बताओ. टेंटेटिवली हम 4 और 6 तक 4th and 6th tentatively I am keeping it. Core committee. Core question mark. हाँ मैं तो हॉलीडे ब्लॉक कर रहा हूँ. हाँ 4th ओके. एक 4th को रख रहा हूँ और एक 6th को रख रहा हूँ. तो प्रेयर डेली ट्यूसडे आफ्टरनून मेरा मीटिंग होता है. दैट कैन बी स्किप इफ नेसेसरी बट फॉर सेफ्टी रीजन. तो दिखा रहे हो 2 बजे से 6 बजे के लिए सर. 3 से 6. ये जो मैकेनिज्म है ऊपर नीचे कर रहे हैं, व्हाट इट इज डूइंग, जो ऊपर नीचे करना पड़ रहा है, व्हाट हाउ इट इज हेल्पिंग. लिफ्ट करता है नीचे से. जब हम नीचे को पुश करते हैं वो कैस्टर पे आ जाते हैं. आशीष के पास वाले वो लिफ्ट हो जाते हैं. अगले वाले नहीं होते तो वो रोटेट करते हैं. अच्छा ओके ओके. बेसिकली पहिया चेंज कर देते हैं फ्रॉम द फिक्स्ड व्हील सेट टू कास्टर व्हील सेट. ओके ओके गॉट इट. ओके चलो रनिंग का आगे क्या बताना चाहते हो बताओ. हो गया. सर इसमें ये हम कुछ ऐसा सोच रहे हैं. बाकी हमारे को सर एक ये जो प्रोफाइल है पाइप्स हैं इसकी जैसे आपको ज़्यादा अच्छी कंपनी बड़ी प्लस मैन्युफैक्चरर बड़े अच्छी प्रोड्यूसर एडी एंटरप्राइज. Are you going to buy another card और जो कार्ड नीचे रखी है उसी में करोगे? नहीं ये तो नीचे वाला फ्रेम आपकी यानी कि इसको पट्टा बढ़ जाए कोई सिस्टम. तो ये हमारा तीसरा मॉडल हो जाएगा. तो ये अकॉर्डिंग टू दिल्ली गवर्नमेंट स्पेसिफिकेशन ये बॉडी शक्ति हो सकती है. बेटा होगा परमानेंट
अच्छा जो नया रूल आया वो 4/6 का है और 4/6 फिक्स है हाइट 3 मतलब हमारा पुराना मॉडल जो है वो यूजलेस हो जाएगा। पुराना जो सिस्टम बना है दैट इज नॉट यूजफुल। No, I think wherever the regulation is not enforced, बट उसके लिए there it can be. और सर ये सुनील का सर आशीष ये पाइप सर ये पाइप सेक्शन था हां इंडस्ट्री में बहुत कॉमन ट्रेन ओके थोड़ा बड़ा रेंज बड़ा ठीक है ऊपर जाना चाहिए पाइप से काम ये पाइप और ये सर ऐसे कंपनी है प्लस सर जो रिक्शे अभी भी ये कार्ड्स हैं तो आइसक्रीम के कार्ड रिक्शा ज़्यादातर इंडस्ट्री में तो ये पाइप यूज है तो इसके बड़े बड़े कुछ फ्लिपकार्ट के वेंडर हैं यहाँ पास में बहुत बड़े गूगल साइट मतलब हम अगर कुछ दे दें प्लस ये भी जा सकता है तो उसमें सारा सेटअप तो ये पाइप बड़े किस्म के पाइप हैं एंड इवन जो हमने बनाया सर प्रोफाइल में वो कह रहे हैं हम एमएस में भी बना जैसा मतलब ये आपका so what are you suggesting? And तो ये सर आपको मैं दिखा रहा हूँ annual exclusion should be converted to pipes. ये बात मतलब हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि ज्वाइनरी भी आता है और मैंने सर कुछ डिसाइड नहीं किया मतलब ये ज्वाइनरी ये सारे सिस्टम अवेलेबल हैं कि सस्ते में बहुत अभी you are doing some value engineering, cost control के लिए काम कर रहा हूँ। क्या है इसके के लिए वेट रिडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन है आपको सर हमने एमओयू में राइटर्स को फाइल बताया था उसमें 25% वेटेज है एंड सेकंड ये आपने ये इंटीग्रेट किया है इसमें अपने आपस में डिस्कस किया इस पॉइंट पे कि जो ऑप्टिमाइजेशन कर रहे थे एमओयू में मैंने बताया था अभी इसका वो अभी सर चेक करना एंड सेकंड थिंग इज वी हैव ऑप्शन ऑफ स्टेनलेस स्टील 316 कहां पे लगाओगे तो की पाइप आती है ये जो पाइप्स की भी बात होगी वहां पर लगा कंसीडर करो 316 में अगर हम बाइक लेंगे तो स्टेनलेस अगर हम पूरा नया कार्ड मान लो हमें 25 ईयर लाइफ देने का तो दिस इज 316 and we have but इसमें तो स्ट्रक्चर के लिए we have to look for something which is not looking to higher cost हम लोगों को पीछे ले रहे हैं we have cheapest option corrugated cone pan steel इसमें एमएस की सीट होती है इसमें बीच में स्टिफनिंग कर देते हैं तो उससे क्या होता है इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ जाती है और मटेरियल की थिकनेस ड्रॉप कर जाती है तो जैसे 1 mm थिकनेस में भी चाहिए तो उसमें हमारी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और वो सर्वाइव कर जाएगा और कॉस्ट बहुत कम होगा और सीट एमएस की भी तो within the canvas profile that is of the mold can be seen related to the point this सर एक बार मैं देख लूंगा इसको हम उसके आया था मुझे तो एक बार सिलेक्ट के साथ की स्टडी चेक कर इन्होंने क्या एनालिसिस किया प्लस ये सर हमने के पास ये सॉल्यूशन किया है उसमें मैंने पुराने मॉडल के लिए चेक किया था जहाँ पर 50,000 का मॉडल लगा था वहाँ पर 70,000 का स्क्रीन इसी हमने ये काम किया था और ये अभी जलंधर कुछ नए क्लास आइडेंटिफाई करते हैं मैं जो आपका नॉलेज और एनालिसिस था उसको यूज करना चाहता हूं कोई अगर प्रोफाइल बनाने को तैयार है तो हम अपनी प्रोफाइल यूज करें फिर हमारा डिजाइन कंट्रीब्यूशन भी हो जाएगा और कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगा जैसे अभी ये होटल्स में यहाँ पर कभी-कभी देखते हैं तो इसकी इंटरनल प्लेसेस को कवर करने के लिए यहाँ पर स्टिफनिंग करनी पड़ती है इसको तो सब तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा डिफरेंट बनाता है आपने जो फाइनल आउटकम था उसको जलंधर के साथ डिस्कस करके बिल्डर से बनाने को तैयार थे लास्ट टाइम हम इसलिए रुके थे क्योंकि आपने आइडियल सॉल्यूशन बनाया लेकिन उसका अवेलेबिलिटी इशू नहीं अब अवेलेबिलिटी इशू बन जाएगा फिर हम इसको एक स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन में लॉक करते हैं ये पॉइंट
तो कैसे कनेक्ट करते हैं इसमें? कि सर कि ये इनके पास काफी सारे स्टेशन हैं, प्लस हम लोग वेयर करने के पास कोई भी सर हम क्लाइंट को फीस करेंगे आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो वो हम भेजेंगे कि ये इंडिकेशन इसका स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि पहला तो सर नीचे मिलता है, प्लस उसको सर हम जो भी फाइल मटेरियल प्रोफाइल डिसाइड करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमएस कोटेड फाइल सो ऑन में अलग अलग कोटेशन डाल देंगे, फिर देखेंगे कि वो उसने जो मुझे कहा कि 5,000 million प्रोफाइल ऑलमोस्ट हाफ कॉस्ट, ठीक है, तो ओके। वो जस्ट जनरल से डिस्कशन की, बाकी से पूरा प्लान अभी विजिट किया नहीं, बट आप शायद जानते हैं How do you know? I don't know. एरिया एंटरप्राइज में स्टील का सेटअप की लैब सेटअप, हाँ। उसमें हमारे को भी कर सकते हैं, शायद बंदे को तो पता किसी के थ्रू इनका पता चला, बस उसने कहा आईटी में बहुत काम, ठीक है, तो सुनील जी का बात पे तो देखते हैं सुनील का जो जिस हिसाब से सर वो ठेले रेडियां बनती हैं, रिक्शा बनते हैं, हाँ। वो पाइपिंग वाली इंडस्ट्री है, या दूसरा रिक्शा भी देखें, साइकिल रिक्शा इसमें लोग बैठ के जाते हैं, वो भी नॉर्मली पाइप पे तो उनका प्रोडक्शन रेट ये वो उनकी टोलिंग वैसी है, तो हो सकता है वो और कैसे भी हो, मतलब ये सब देखना पड़ेगा, और ये जस्ट एक इसको इनकॉर्पोरेट करके देख रहे थे, ठीक है, चलो आई थिंक नाउ बिकॉज़ द टाइम दिस इज एज पर दिल्ली गवर्नमेंट स्पेसिफिक। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट सर ये था कि इन्होंने राजीव ने एक एक्सेल बनाई थी, वो बन गई है, तो मतलब कंपैरिजन किया होगा कि कौन सी आईटी की क्या है, तो नेक्स्ट मीटिंग में कर दो, ठीक है। कि किस आईटी में क्या क्या वो स्पेसिफिकेशन उन्होंने ला चुके हैं, हमारा स्पेसिफिकेशन अभी तो बने सर हमने वो अभी प्लीज नहीं किया, नहीं, जो भी तुमने बनाया उसका तो कुछ स्पेस बन ही सकते हो ना, तो वो तो बनाओ, जो भी कंपैरिजन करेगा वो स्पेस कंपैरिजन में डालो। जी जरूर, जो स्टेनलेस स्टील का टॉप सरफेस है, मैंने को अपने मॉडल में इंप्रूव करने के लिए बोला, या आपने इसमें भी डाला हाइजीनिक रिसेप्शन जो है बनाया था, उन्होंने की 10 स्टेनलेस स्टील शीट इस सरफेस पे लगा था, वहाँ पहले जिसपे अगर हम मान लीजिए प्लेट्स यूज नहीं करते, if you don't use the plates, you want to have vegetables and fruits lying on the surface. Okay. So that is one of the ये पूरी हम कैश ये जो डाउन स्केल पर है, अच्छी बड़ा कोट में जो होती है ये जो सर रखी हमने बनाई है पेन स्केल पर, ये आप करें तो बहुत मैसेज नहीं, वो नहीं क्रेन लिखा जाएगा में पूरी, मतलब थ्रेड्स की बात है, यहाँ पर भी ग्रुप या वेजिटेबल कॉन्टैक्ट में आएगा, इंस्टेड लेट्स से वी रिमूव द थ्रेड्स, वी पुट सम पार्टीशन, फूड कोर्ट जो होता है ना, खाना रखते हैं ना, ऐसे वो निकल जाते हैं, और खंबा होती है ना, पार्टीशन सब्जियां, राइस, दाल, उन्होंने पहले यही इस टाइम का आता है एक्शन खेले वाले ने, तो गर्मी पड़ती है वो हीट से, इसीलिए वो लकड़ी रखते हैं, या वो लाल कलर का फैक्ट्री दिखता है, तो हीट अप जल्दी होता है, अगर नीचे से कूलिंग सिस्टम है तो वो बता रहेगा, कूलिंग तो उतने क्वेश्चन, हाँ नहीं वही की बात है, अच्छा वहाँ वहाँ पर परफोरेटेड शीट लगा देते हैं, तो नीचे से कोल्ड एयर जो है वो हाँ वहाँ की सपोज एक वर्जन इसका बनाते हैं जिसमें बीच में प्लेट्स नहीं है, और वहाँ पर स्टेनलेस शीट के एरिया लगा दिया विद पार्टीशन, स्टेनलेस की शीट से कवर कर देते हैं, तो देन वो नीचे से कूल्ड है तो ठंडा भी रहेगा और उसमें सामान रख सकते हैं साफ कर, दैट इज द पॉसिबिलिटी। जहाँ मॉइस्चर होगा ना, बैक्टीरियल ग्रोथ और बैक्टीरियल एक्टिविटी, ये वैल्यू ऐड है, तो परसेप्शन दैट चेंज, यहाँ पे क्लीन और कूल्ड, मतलब उतना क्वेश्चन सेंटर हाँ सर, स्पेशल एरिया वो सर इसमें थोड़ा सा ना काम actually with this money I'm asking them to make this whole thing in stainless steel because they are going to take care of the shading also. They're already shading. So this concern he has about thinking about that. And the perforated sheet part actually takes care of two things. Where there is no cooling underneath, it will allow any water etc. to drip down, not stay on. And where we have the cooling unit,
the air after it hits that box too will be coming at the bottom of these two split. Instead of being smaller holes, so that's a slightly different concept than what we have shown here in this. ठीक है तो बात करते हैं मेरे को क्लोज इट ऑटो चेक वाला तो इस रिलेटेड मीटिंग का और ऑटो चेक बस आ गया बस आ गया आ रही है रास्ते में और एक बार की बात करी मैं तो पहले बात कर रहा हूँ तो जाम में था दूसरी बात तो हाँ किसी का कोई पॉइंट है आप किसी का स्टार्ट इधर आशीष यशवंत मंगल इधर इधर 17 और 18 है वो हमारा ऑफिस में एक जयपुर व्हाइट बोर्ड उसमें लिखा है कि 18 कौन बताएगा 18 है ना 18 इसमें से 2 फ्लोर तो 16 White board का virtual equation भी बना सकते हैं। रवि तुम्हारा दोस्त नहीं बस अरे पीछे तुम्हारा दोस्त है you have any question When I online. so you can do अंदर वाले यहाँ पे very good Shitish, do you have anything okay so Vinay you have any question No, sir. okay sir thank you Thank you. Thank you, sir. We are taking beautiful photos As a group, we Okay. want to say very good work done by you guys. thank you Thank you, sir. and we want the ICFC to contribute here to see how we can take these two arts together root art and robotics Okay. so that we can make it R square not R plus R square Chalo, thank you everybody let's cooperate with Akash for taking photographs बस आ गई है सर very good then by 20 minutes max you should be reporting downstairs Bus will start at 1:30 if you don't come down because you need out 10 minutes to check out also So we are departing from here to have local parothas and then go straight to Ahmedabad. right exactly no coming back your chair bag will be in the bus इसको लॉग आउट करना अच्छा रविंद्र हम ना उस तक दूर नहीं जाएंगे तो उधर नहीं जाएंगे जो आइडिया ट्रेनिंग होगा अच्छा किसी को पता ना पड़े I have written one याद रखना